hope you guys are doing well. Welcome to another live stream for your October exam revision. The main point why I wanted to keep it early in the morning was कि जो भी concept है वो हम लोगों को अभी हम revise कर लेते हैं and then we will keep another class at night today जिसमें आपके कोई problems होंगे, कोई problem sets होंगे, कोई important questions होंगे and I hope we will be able to address all of those. Again, so the syllabus that I've received उसमें mainly हमारे पास 4 main topics हैं and those 4 topics the ones that I got were basically there was hold on, let me check. Yeah, so there was salt analysis, that was one. There was electrolysis, that was the second. Let me see if there was another one. Yeah, there was metals and reactivity series, that was the third one. Metals and reactivity series, and then there was tests for gases. ठीक है, तो ये हमारे पास 4 topics हैं and I think 1 hour should be good enough for us to review all of that. You just need to make sure that as far as the salt analysis and the test for gases topic is concerned, you're using the latest syllabus. So अगर आप अपने syllabus में जाते हो ना, so syllabus के page number 33 पे there is a whole list of ions that you need to know. ठीक है, और उसको the easiest thing to do is just Google it, 5070, that's your syllabus code, syllabus 2023. ठीक है, क्योंकि 2022 और 2024 के बीच में हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, तो 2023 से लेकर 2025 तक का जो सिलेबस है दैट्स द वन वी शुड बी लुकिंग एट. और ये बड़ा बेहतर उन्होंने कर दिया है सिलेबस को एज फार एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस सिलेबस इज कंसर्न. सो लेट्स क्विकली गो ओवर द शॉर्टेस्ट टॉपिक इन हेयर विच इज़ टेस्ट फॉर गैसेस. अब आपके सिलेबस में देर आर दीज 6 gases that you need to know about. So here they are. Let's quickly go over this. Again, this is a lot of memorization. So obviously going over this multiple times will obviously help you out. अच्छा, अब इसको देखते हैं कि गैसेस को टेस्ट कैसे करते हैं और एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन कैसा पूछता है. सो सबसे पहले आप देखोगे द फर्स्ट गैस दैट वी हैव हियर इज़ अमोनिया गैस. अब अमोनिया गैस में क्या है कि आपके पास इट्स अ बेसिक गैस. ठीक है, सो अमोनिया हमारे पास बेसिक होती है विच मीन्स कहीं ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होगी, वीकली बेसिक है तो इसकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होगी. तो वो चीज़ें भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि अच्छा अ गैस इज डिज़ोल्व्ड, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड पीएच, अ गैस इज डिज़ोल्व्ड. लिटमस पेपर का टेस्ट तो आपके सामने हो गया है. ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. तो उसका तरीका क्या है कि वो उसको करें. सिमिलरली वो गैसेस को टेस्ट करते हुए उसको डिफ्यूजन के साथ कनेक्ट करता है. तो आपको पता है कि अमोनिया का MR जो है वो 17 है. तो इसका मतलब है कि अगर कोई HCl गैस आएगी उसके साथ में, एंड अगेन HCl इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर, पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, अदरवाइज वो हाइड्रोजन क्लोराइड है. सो अमोनिया will have a lower MR, और lower MR का मतलब क्या है कि it will diffuse faster, which means कि अगर यहाँ से उसने गैस को रिलीज़ किया है और 2 गैसेज हैं, लेट्स सपोज दे आर रेसिंग टुवर्ड्स लिटमस पेपर, सो MCQs में वो आपसे पूछ सकता है कि विच चेंज विल हैपन फर्स्ट. सो ऑब्वियसली वी नो बिकॉज अमोनिया हैज़ अ लाइटर MR देन हाइड्रोजन क्लोराइड, इट विल रीच इट फास्टर, विच मीन्स कि वो जल्दी लिटमस को रेड टू ब्लू करेगी. एंड दैट इज़ बेसिकली अ वे फॉर अस टू नो कि ये डिफ्यूजन हो रही है. ये diffusion depends on the MR and ammonia has a lower MR and it's basic, so it's able to reach it faster. ठीक है, so all of those things are very relevant when it comes to the test for gases, क्योंकि वो वहाँ पे diffusion के साथ उसको connect करता है. कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत सिंपल सा टेस्ट है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. बेसिकली लाइम वाटर इज़ एन बेसिक सब्सटेंस एंड एल्कलाइन सब्सटेंस, और वो होता क्या है, दैट इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या लाइम वाटर इज़ अ गुड थिंग टू ऐड टू acidic soil? So yeah, it is because carbon dioxide is acidic, it's reacting with calcium hydroxide and it's forming this white solid. आपको कभी भी वो उसका फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि वाइट सॉलिड का फॉर्मूला क्या है. यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ, इट टर्न्स इट मिल्की, विच मीन्स इट मेकिंग अ वाइट सोल्यूशन और अ वाइट सॉलिड.
क्लोरीन ब्लीचेज लिटमस पेपर. अब इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन इज़ दी only one gas in your syllabus that changes the color of both litmus paper, red हो या blue हो. क्लोरीन विल चेंज द कलर बिकॉज क्लोरीन विल ब्लीच इट. उसने उसको वाइट कर देना. तो ये भी उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट इन विच केस, वो आपको 2 गैसेज दे देता है, वो आपसे कहता है कि इन विच केस विल बोथ द गैसेज चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर. अब लेट्स सपोज उसने ब्लू दे दिया, तो आपको पता है कि अमोनिया के साथ क्लोरीन चेंज नहीं करेगा. क्यों? अमोनिया विल कीप इट ब्लू बट क्लोरीन विल ब्लीच इट. सो आपको उसने अगर बोथ गैसेस का बोला है तो क्लोरीन इज़ दी ओनली वन इन दैट पेयर. लेकिन अगर आपसे कहते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड विद क्लोरीन है तो अब वो ब्लू को रेड दोनों करेंगी और उसके बाद क्लोरीन विल इवेंचुअली ब्लीच इट. तो आपको वो इस तरह कंबाइन कर देता है डिफरेंट गैसेस को. आपसे कहता है कि यहाँ पे बताएं कि दोनों के रिजल्ट्स सिमिलर होंगे या सेम रिजल्ट्स होंगे. तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो. देन हाइड्रोजन पॉप्स विद अ फ्लेम. Many students keep on saying that hydrogen extinguishes it with a flame, extinguishes the flame. You don't need to write that. There is no need for that because all we are concerned with is that hydrogen is explosive, it pops in a flame. That pop sound is a proof that it is hydrogen gas. So that's good enough. और फिर उसके साथ हमारे पास lighted splint होता है और glowing splint होता है. Hold on, I think it changed it. Yeah, I was here, I think. कोई पुराना निकला है नोट. होल्ड ऑन. या दिस वन. सॉरी अबाउट दैट. या सो लाइटेड स्प्लिंट एंड ग्लोइंग स्प्लिंट का फ़र्क क्या है? लाइटेड स्प्लिंट हैज़ अ फ्लेम, ग्लोइंग स्प्लिंट डज नॉट हैव अ फ्लेम, विच मीन्स दैट टू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन यू नीड अ लाइटेड स्प्लिंट, यू नीड अ फ्लेम जिसने पॉप करना है. बट ऑक्सीजन के साथ अ ग्लोइंग स्प्लिंट इज़ फाइन. तो इन केस द क्वेश्चन is about asking you to write it down, so you have to be very clear that lighted splint is for hydrogen, glowing splint is for oxygen. But हाँ, अगर MCQs में तो वो ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा ना. आपने लिखते हुए ये मिस्टेक नहीं करनी है. ऑक्सीजन relates a glowing splint because oxygen is helping out the flames, तो वो हमें वहाँ से पता चल जाता है. And sulfur dioxide was recently added to the syllabus, and again this is acidic, and more than that, sulfur dioxide can be oxidized. You know from contact process that sulfur dioxide can be converted to sulfur trioxide, so that means कि वो SO2 oxidize होती है, SO3 बनता है, and here we have potassium manganate and that is an oxidizing agent. ये आपने grade 10 में पढ़ा होगा. So because it's an oxidizing agent, that is telling us that this gas can be oxidized, and if this gas can be oxidized तो oxidizing agent उससे react करेगा, जो वो करता है, and goes purple to colorless. Again, purple to colorless, that's important. Sulfur dioxide can be oxidized, and this is the proof of that. Flame tests were also in the syllabus added recently, but they are not in your October test syllabus, so I'm going to ignore that for now. Let's move on to the other cations and anion tests. अब cations और anions के टेस्ट करते हुए ना आपको obviously टेबल को याद करना आसान काम नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे मैं कहूँ कि ये कैटाइंस है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल है आपके, एज आई टोल्ड यू ऑन पेज 36 ऑफ द सिलेबस, आपको 37 ऑफ द सिलेबस, आपको यहाँ पर ये टेस्ट फॉर कैटाइंस मिल गया. लेकिन इसको याद करना इट्स नॉट दैट ईजी ऑनेस्टली, एंड आई डोंट नो ऑफ एनी पर्सन हु वॉज एबल टू फुली मेमोराइज द टेबल जस्ट बाय looking at it as the table. What helped me was 2 things. One was doing it in the lab, but हमारे पास आज उसके लिए टाइम नहीं है. But once you're done with the exam, I would strongly urge that you go to the lab, you perform these tests. They are very easy to do, and of course you have to have a certain level of seriousness when you're going into the lab, because lab is no playground. वहाँ पे आप चीज़ों को you have to respect them, you have to take care of them, and you have to be very cautious when dealing with these things. But if your teacher gives you a demo, or if the teacher allows you to do it, make sure that you take that opportunity, and you will learn much better from that experiential learning that you have. आज के लिए हम फिर क्या करें? तो आज के लिए we will devise a method, और वो मेथड अगर हमें आ जाएगा ना तो हमें ये पूरा टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ठीक है. अब उसके लिए मैं आपको हाउ आई ट्राई टू डू इज, देयर इज़ ऑल्सो वीडियो माइन ऑन टेस्टिंग फॉर कैटाइंस एंड टेस्टिंग फॉर एनाइंस. वो एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड लेसन है, यू कैन वॉच दैट इफ़ यू वांट. आई विल पुट द लिंक हियर. बट मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि हम टेस्ट करते कैसे हैं. बेसिकली एवरी टेस्ट इज़ डन थ्रू अ reagent. We have 2 reagents here. One is sodium hydroxide, aqueous obviously,
and one is ammonium hydroxide, जिसको हम aqueous ammonia भी बोलते हैं. So both of them are, the important thing to remember is they're both hydroxides. So the colors are for hydroxides, and we are using these things to make those hydroxides. क्यों? Because we know that hydroxides are insoluble, and because they're insoluble, they can give us precipitates, and based on that we can easily figure out कि अच्छा ये चीज़ हमें जो precipitate मिल रहा है, how what the color is, या वो soluble हो जाता है बाद में या नहीं होता, तो उससे हम different anions और cations को टेस्ट कर लेते हैं. अब cations को टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट होंगे. फर्स्ट टेस्ट विल बी द कलर टेस्ट. कलर टेस्ट सिंपली टेल्स अस द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, कि प्रेसिपिटेट बन रहा है और उसका कलर क्या है. उससे हमें हमारी ऑप्शन जो है ना वो लिमिटेड हो जाती हैं. वी हैव 8 cations टू चूज़ फ्रॉम, बट द कलर नैरोज दैट ऑप्शन नाउ. एंड देन टू कन्फर्म विच वन दिस इज, वी डू द सेकेंड टेस्ट विच इज़ द solubility test. Okay, so there's few cations that are forming hydroxides which are soluble in excess of ammonia and in excess of sodium hydroxide. We don't need to go into why that is. वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो तो हम A2 में पढ़ते हैं कि क्यों होता है कि एक चीज़ soluble है और एक चीज़ soluble नहीं. अभी के लिए what we need to know is just memorize what they are. So let's start with sodium hydroxide first. So I'm going to take sodium hydroxide. Sorry, this is an ad. Yeah. So I'm going to take sodium hydroxide and I'm going to put the amount in there. ठीक है? I'm going to do that. So what will I do? I need to first do the color test and then I'll do the solubility test. उसको करने के लिए मुझे क्या करना है? I'll add a few drops. This is my color test. ठीक है? A few drops से मेरे पास क्या options आती हैं? I have 3 options. First option, it will give me bubbles. Now every time you mention that you're getting bubbles, make sure that you mention what those bubbles are of, और उसका तरीका क्या है. You don't say that this gas is evolved, you say bubbles that do this. ठीक है? So for example, in this case, bubbles of a gas that turns red litmus blue. So we already know the gas tests. हमें यहाँ पे ऊपर पढ़ा है that there's one gas that turns damp red litmus blue, which is ammonia. So we will do that here, that we are getting bubbles of a gas that turns damp litmus blue. And if that happens, then this is ammonium. ठीक है? एग्जामिनर आपको इन 3 में से 2 चीज़ें बताता है. वो आपसे कहेगा एड ड्रॉप्स कर दिए मैंने और बबल्स आए, आपने बता देना अमोनियम. वो कहता है अमोनियम है और फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए थे, तो इसका मतलब है बबल्स आए होंगे. वो आपसे कह देता है कि बबल्स हैं और अमोनियम है, ऐड क्या किया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए थे. ठीक है? सो आउट ऑफ दीज 3 थिंग्स दे विल गिव यू 2 थिंग्स एंड यू हैव टू फिगर आउट द थर्ड थिंग. द सेकेंड ऑप्शन दैट वी कैन गेट is that we can have a white precipitate, and you can write PPT in the syllabus, that is acceptable, in the exam that's acceptable. Now if you get white precipitate, that narrows your options to just non-transition elements, क्योंकि transition elements always give you colored substances. That's a property that differentiates them from other ions or other metals. So when you're getting white precipitates, that is a hint right away that you have either calcium, you have aluminum, or you have zinc. Okay, these are the 3 main ions that you have if you're getting if you're getting white precipitates. Okay, so based on this white precipitate you can easily see कि calcium, aluminum, zinc में से होगा, तीसरा कोई नहीं होगा. ठीक है? आपके सिलेबस में नहीं है. हाँ, आपने देखे होंगे कुछ टॉपिकल्स में लेड भी आ जाता है, कुछ टॉपिकल्स में मैग्नीशियम भी आ जाता है, but that is not in your syllabus anymore. Okay, now we do the third test, which is you get a colored precipitate. The moment you get a colored precipitate, that tells you that you have transition metal in it. Okay, so that's a proof. Okay, and then based on that color you can decide which one you have. So the 3 colors, the primary colors that we have red, you have blue, okay, and you have green. So these are the 3 primary colors और आपके सिलेबस में इन्हीं का टेस्ट है. So red अगर आता है, so that will tell you that you have iron 3. Blue आता है, that tells you have copper 2. और green आता है, तो that tells you have chromium 3 or iron 2.
So far what we have seen is that based on the color you can see कि अगर आयरन 3 है तो वो रेड होगा, अगर कॉपर 2 है तो वो ब्लू होगा, और अगर हमारे पास कोई और कलर है जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये ग्रीन है तो इसका मतलब है कि ये क्रोमियम 3 या आयरन 2 होगा. तो ये 3 कलर्ड कॉम्पाउंड्स आर टेलिंग मी दैट यू हैव ट्रांजिशन मेटल एंड विच वन यू कैन ईजिली फिगर आउट बेस्ड ऑन दैट. ठीक है. सो वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि हमारे पास कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है. कलरफुल प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है. तो कई दफ़ा वो आपको फर्स्ट दे गिव यू दैट ओ दिस वाज डन एंड कलर प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म. सो दैट इज़ अ प्रूफ फॉर अस कि हाँ ये ट्रांजिशन मेटल है. ओके. सो दैट इज़ अ वे फॉर अस टू फिगर आउट कि यहाँ पर क्या हो रहा है. क्लियर? आई होप दिस इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Okay, moving on. Now you did a color test. अब color test इसका भी few drops में होगा, अमोनिया का भी few drops में होगा. ठीक है. And based on that कि ये कौन सा वाला you can easily figure out कि ये यहाँ पर हमें कौन सा precipitate मिल रहा है. So bubbles and ammonia में, and whenever you're talking about the bubbles you have to mention what gas it is. So bubbles of a gas that turns damp red litmus blue. वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब है ट्रांजिशन मेटल नहीं है, कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक है. कलर्ड का मतलब है ट्रांजिशन मेटल है, और रेड ग्रीन ब्लू में से ये 3 हमारे पास ऑप्शन है. नाउ हाउ इज़ दिस गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एनी अदर गैस दैट यू हैव, ओके, और एनी अदर कैटन दैट यू हैव, स्पेशली व्हाट इफ आई एम यूजिंग आई एम सॉरी दिस इज़ ए लेवल स्टफ, दोबारा से खुल गया, होल्ड ऑन. I think it's sinking, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू होता है. Now how is this different from the ones that we have for aqueous ammonia? तो हम देख लेते हैं इसको. If you have the same thing for aqueous ammonia, let's say I have this same thing, that's very similar for aqueous ammonia. उसमें भी आप few drops ऐड करते हो, उसमें भी आपको ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं. फ़र्क क्या है? So aqueous ammonia में फ़र्क क्या है? Number 1, एक्वस अमोनिया में अमोनियम रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज अमोनियम विल नॉट रिएक्ट विद इटसेल्फ. और एक्वस अमोनिया में क्या होता है? एक्वस अमोनिया इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हाई वुड अमोनियम रिएक्ट विद? सो वी विल से नो रिएक्शन. सो दैट इज फर्स्ट चेंज दैट यू विल सी. देन इंस्टेड ऑफ हैविंग बबल्स ऑफ गैस दैट टर्न्स रेड टू ब्लू, इन दिस केस दिस इज गिविंग अस नो रिएक्शन. सेकेंड ऑप्शन, calcium will also not react for reasons we don't need to get into. Calcium will also not react. So as far as few drops are concerned, these are the only changes. ठीक है. So few drops of sodium hydroxide, bubbles of ammonia, white pressure of calcium. Those are two different things from aqueous ammonia, because with aqueous ammonia both of them give no reaction. बाकी सब सेम है. तो आपने अगर याद करना है, सो यू जस्ट रिमेंबर, एक का याद कर लो, दूसरे का चेंज याद कर लो कि फ्यू ड्रॉप्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सारा कुछ देता है जो मैंने अभी आपको दिखाया. और चेंज क्या है एक्वस अमोनिया में? दैट अमोनियम एंड कैल्शियम डोंट रिएक्ट. दैट्स द ओनली डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू फ्यू ड्रॉप्स. ठीक है. अच्छा, अब फ्यू ड्रॉप्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इफ़ you don't add few drops and you add it in excess right away, you will skip this test. Precipitate form होने का वक्त नहीं देंगे आप. Okay, so examiner इसको भी टेस्ट कर सकता है that what if a student adds it right away, the student added it too quickly. अब उससे क्या होगा कि precipitate बनने का मौका ही नहीं मिलेगा. So then we get to the second test which is solubility test. ठीक है. So the second test is solubility test, और वो कैसे करते हो आप? वो आप add in excess करते हो. ठीक है. और एड इन एक्सेस में हमारे पास ऑब्वियसली सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. आई एम गोइंग टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट. ओके, आई एडेड इट इन एक्सेस. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस. ईदर इट विल डिसॉल्व or it will not dissolve. I will say precipitate is insoluble. If it doesn't dissolve, I'll say precipitate is insoluble. Okay, so those are my two options. Either it will dissolve or it will not dissolve. Okay, so in sodium hydroxide, obviously I'm looking at the precipitate कि वो dissolve होता है या नहीं होता. So precipitate that dissolves, वो हमारे पास कौन से हैं? In sodium hydroxide, you have zinc that dissolves,
Okay, you have aluminum that dissolves, and you have chromium that dissolves. Zinc, aluminum, chromium. These are the three that dissolve, and everything else are insoluble. So अगर आपसे वो कहते हैं कि रेड प्रेस्ट्रेट है, इनसॉल्युबल है, ग्रीन प्रेस्ट्रेट है, इनसॉल्युबल है, तो वो क्रोमियम नहीं हो सकता. ग्रीन प्रेस्ट्रेट सॉल्युबल होता है क्रोमियम, इनसॉल्युबल होगा आयरन. ब्लू प्रेस्ट्रेट है, सॉल्युबल नहीं होगा बिकॉज नॉट इन दिस लिस्ट. वाइट प्रेस्ट्रेट है, सॉल्युबल नहीं है, तो वो जिंक और एल्यूमिनियम नहीं हो सकता, वो कैल्शियम होगा. सो इफ़ यू रिमेंबर दीज प्रेसिपिटेट्स ओवर हेयर, तो हमारे पास सॉल्युबल कौन कौन से हैं? आई विल जस्ट राइट इट डाउन. सो कैल्शियम इनसॉल्युबल है, तो इट विल नॉट डिजॉल्व. ठीक है. आयरन इनसॉल्युबल है, कॉपर इनसॉल्युबल है, आयरन 2 इनसॉल्युबल है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू रिमेंबर द वंस दैट आर सॉल्युबल. ठीक है. सो वो हमारे पास we have aluminum and zinc that are soluble, we have chromium that is soluble, and these three, when they dissolve, they differentiate them from the others. So अब इसको combine करते हैं. White precipitate didn't dissolve calcium, white precipitate dissolved zinc or aluminum. You will mention both of them, एक नहीं लिखना. Okay. Green precipitate dissolves chromium, green precipitate doesn't dissolve iron. बाकी तो precipitate जो भी हो वो dissolve होना ही नहीं. So this is ammonia का in excess. Now how does this differ from ammonium hydroxide in excess? So sodium hydroxide तो हमने देख लिया. So how is the result of sodium hydroxide different from aqueous ammonia? Now let's see. As I told you, आपने एक का याद करना है और एक का change याद करना है कि how does that differ? So first of all, aluminum यहाँ पर नहीं होगा, chromium यहाँ पर नहीं होगा, zinc and copper will dissolve. That's the difference. So अगर मैं देखूँ तो difference हमेशा थोड़ा सा minor सा ही difference है. I just need to remember one and based on that I can remember the other one. अगर मुझे sodium hydroxide पता है कि that is zinc, aluminum and chromium, and in the other one it is zinc and copper. So मुझे बाकी automatically पता चल जाएगा कि कौन insoluble है. So मुझे उसको डिटेल में याद नहीं करना है. I'll just remember these 5 ions and based on that I can easily figure out कि मेरे पास क्या सिचुएशन है और कौन से आयन सॉल्युबल हैं, कौन से इनसॉल्युबल हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन ईजिली सॉल्व दिस. अच्छा, अ कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ वाइट प्रेस्टेड, व्हाट डज दैट शो? दैट शोज यू डोंट हैव ट्रांसफर मेटल. ओके. सिमिलरली अगर आपको पता चल रहा है कि एक आयन है जो कि दोनों में डिजॉल्व हो रहा है, वो जिंक है. कोई आयन है जो एक में डिजॉल्व हो रहा है, तो वो हमारे सामने लिस्ट है. एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, ये तीनों एक में डिजॉल्व होते हैं, दूसरे में नहीं होते हैं. ऑलराइट. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर आयन. वो ब्लू होगा, कॉपर सॉलिड पिंक होगा. Remember this, state symbols play an important role. So a couple of important points to remember. Zinc ion dissolves in both, aluminum and chromium only in NaOH, copper in ammonium. ठीक है. अच्छा, I read it somewhere, I don't recommend it for everybody, लेकिन एक आसान तरीका, again it's easy for some people, मुझे तो ये पर्सनली इतना पसंद नहीं आया था, बट वो ये था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में जैक है और अमोनियम में कज़न है. सो यू कैन रिमेंबर इट एज योर कज़न जैक. आई रेड इट समवेयर. सम पीपल माइट प्रेफर इट, बट अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस इफ यू थिंक कि कज़न जैक इज समबडी और सम नेम दैट यू माइट वांट टू रिमेंबर. हेलो फसी, गुड टू सी यू हियर. ऑलराइट, सो दैट वाज कैटायन एनालिसिस. नाउ वी मूव ऑन to anions, and anions के लिए भी आपके पास एक टेबल है, and as I said, I personally don't like tables much, so but I will still give you that thing, क्योंकि anions के लिए unfortunately this is the best way to visualize them at the moment. So मैं आपको कुछ common themes बता देता हूँ इसके अंदर. So you have to understand that when it comes to anions, there are 2 anions that give you gases, one and the remaining anions give you precipitates. So the 2 anions that give you gases,
वो हैं कार्बोनेट, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड the other one किधर गया, नाइट्रेट का है, हाँ नाइट्रेट, which gives you ammonia gas. So these are the two that give you gases, and the other 4 or 5 they give you precipitate. ठीक है. अच्छा, अब precipitates को याद करना बड़ा आसान है. कार्बोनेट का टेस्ट क्या है, एसिड डाल दें, कोई भी एसिड ऐड करोगे ना इट विल ब्रेक डाउन, गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, उसका आपने रिजल्ट क्या लिखना है कि एफरवेसेंस है. सम स्टूडेंट्स राइट एफरवेसेंस, सम स्टूडेंट्स राइट बबल, सम स्टूडेंट राइट गैस रिलीज्ड. नाउ गैस रिलीज्ड इज अ कंक्लूजन. ऑब्जर्वेशन में आई वुड सजेस्ट यू डोंट ऐड दैट. ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन में आप गैस रिलीज नहीं लिखना, लेकिन बबल्स लिख सकते हो आप एफरवेसेंस लिख सकते हो, and they're both the same, but don't write gas released. This was in I think it was in one of the examiner's comments. Okay, gas released is a conclusion, not an observation. खैर, whatever they say, हम इसमें या effervescence लिखेंगे या bubbles लिखेंगे. Okay. Similarly, every time you mention that there are effervescence or bubbles, mention the test of the gas. जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है effervescence carbon dioxide produce या ammonia produce. So I would suggest कि आप यहाँ पे लिखो कि बजाय इसके कि आप डायरेक्ट लिख दो ammonia produce, which will be correct, but you can go an extra mile and you can also write that bubbles of a gas that turns damp litmus blue, or bubbles of a gas that turns lime water milky, or effervescence that turn lime water milky, because that way you are also quantifying कि आपने गैस का टेस्ट भी आपको आता है. So ATP में भी ये हेल्पफुल होता है, and later on in A levels obviously it will help you out as well if you're taking chemistry. If you're just focusing on the other ones now, so you have 3 groups of anions, these 3 and these 2. So ये 2 groups हैं आपके पास which have very similar test but slightly different results. तो अगर आप देखो कि टेस्ट इनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दे ऑल हैव द सेम टेस्ट. यू ऐड नाइट्रिक एसिड, अगेन यू कैन ऐड एनी अदर एसिड, बट इट माइट इंटरफेयर विद दीज रिजल्ट्स. नाइट्रिक इज द वन दैट विल नेवर इंटरफेयर, सो इसलिए हम नाइट्रिक एसिड चूज़ करते हैं. सो ऐड नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट. दिस इज़ फॉर ऑल द हेलाइट्स, विच मीन्स you can make a connection here that if you are getting a silver nitrate, that silver ion is there for halides. So ये connection जो है ना एग्जाम में बहुत हेल्प आउट करते हैं if you have those mental connections there. So silver आ गया तो मतलब halide का टेस्ट हो रहा है, बेरियम आ गया मतलब सल्फेट सल्फाइड का टेस्ट हो गया. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट, क्रीम, येलो. क्लियर ट्रेंड है, the color is darkening because group 7 है, group 7 में color darkens down the group, and so is the case with their precipitates. So white है तो chloride है, cream है तो bromide है, as you can see. अच्छा, used to be this way that they will give you barium and they'll ask you कि sulfate और sulfide दोनों white precipitate देते हैं, जो कि देते हैं, but they have made it easier for you in 2023 syllabus that they have simply said कि different test कर लो. बेरियम आ गया तो सल्फेट का टेस्ट है, और KMnO4 आ गया तो सल्फाइड का टेस्ट है. उसने टेस्ट ही डिफरेंट यूज़ कर लिए हैं. क्यों? KMnO4 कैन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सल्फाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड. तो हमें वहाँ से पता चल रहा है दैट बिकॉज इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड दिस मस्ट बी गोइंग पर्पल टू कलरलेस. तो जब भी कोई चीज़ कलरलेस कर देती है KMnO4 को, इट गोज पर्पल टू कलरलेस, दैट्स प्रूफ दैट दैट थिंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड. इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट. दैट्स व्हाट इट सेज. Okay, so based on this we can easily figure out what the anions and what the cations are. Okay, so I hope that part is pretty clear कि किस तरह से you can divide them in groups of ions and you can see the connections that are common in all of them. So silver आ गया तो मतलब halide का टेस्ट हो रहा है, barium आ गया तो sulfate का टेस्ट हो रहा है, and these connections will actually, I'm not kidding, it will actually help you much more in MCQs than just ratifying कि क्या कैसे होता है. Alright, so that is salt analysis and test for gases. So again, as you can see, इसमें याद करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं. I would strongly urge, there are worksheets on the website. मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए हैं. We also have a WhatsApp group. I will be sharing those in there as well in case you need them. So feel free to join them. If you want to, if you don't have the link for the WhatsApp group, you can go to my Insta, और वहाँ पर in my highlights all the links are there. So you can go to the group for 01, 9, 10, 11,
A1 A2 जो भी आपके relevant groups are, you can join them, and I hope that many students are also helping in this case, and I'm really glad they are, because this way we can easily build a very good academic community to help each other out. Khair, moving on, the next thing that I want to talk about is electrolysis. Again, अभी मैं सिर्फ theory की बात कर रहा हूँ, जो questions वगैरह होंगे feel free to send them to the WhatsApp group, you can DM me as well, and then tonight inshallah we will keep another session in which we will review any questions or any past prepared topical questions that you have, ताकि वो भी आपको समझ आ जाए. अब electrolysis में the main idea is that first of all electrolysis में वो definition इतनी ज़्यादा नहीं पूछता है, so don't spend too much time remembering those. Electrolysis में हम करते क्या हैं, we break an ionic compound into whatever elements or substances it is made from. उसके लिए आपके पास एक basic setup होता है. उस basic setup में you have a cation, you have an anion, ठीक है, एक DC बैटरी चाहिए आपको, DC source चाहिए, because you need to fix the flow of current, the direction that is there. Sometimes वो circuit में आपको resistor भी डाल के दे सकता है, bulb भी डाल के दे सकता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हम तो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, फिजिक्स में तो नहीं डील कर रहे हैं इस वक्त. सो दोज थिंग्स आर जस्ट एक्स्ट्रा फॉर अस, वी डोंट नीड टू कंसर्न आवरसेल्व्स विद दोज एट द मोमेंट. इसके बीच में आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है. वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो समटाइम्स इट इज़ aqueous, sometimes it is molten, but in both cases it is something that conducts electricity. If it does not conduct electricity, then it's not an electrolyte, and that is the first thing that examiner tests you on, कि which of these will conduct electricity and which of these will not conduct electricity. So उसके लिए you have to remember that this thing must be having free ion, so it has to be a metal in the liquid form, एक तो ये होना चाहिए, या it could be an ionic compound in the liquid form or aqueous form, because any of the other cases will not be able to do it. So mercury है conduct करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है अकेले में नहीं करेगा, लेकिन अगर लिक्विड है करेगा, अगर एक्वस है करेगा, सॉलिड है तो नहीं करेगा. एथेनॉल है नहीं करेगा, क्यों? आयंस ही नहीं है. प्योर वाटर है नहीं करेगा, आयंस ही नहीं है. HCl है नहीं करेगा, आयंस ही नहीं है. फ्री आयंस होना ज़रूरी है, विदाउट दैट इट विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट. अब ये चीज़ें क्या हैं? ये हमारे पास हैं कैटायन को अट्रैक्ट करने के लिए हमने कुछ रॉड्स टिप किए हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं. सही है. सो दिस साइड इज़ पॉजिटिव, दिस साइड इज़ नेगेटिव, विच मीन दिस होल थिंग इज़ पॉजिटिव, this whole thing is negative. So negative attracts anion, so this is anode. Positive attracts cation, oh sorry, negative attracts cation, क्या हो गया? Negative attracts cation, so it is cathode, and positive attracts anion, so this is anode. Sorry about that. Okay, so अब होगा क्या? आपके पास यहाँ पे positive ions हैं, negative ions हैं. All the positive ions are going to be attracted towards this, and all the negative ions are going to be attracted towards this, and they will do what we call discharge. Discharge क्या होता है? That they make neutral things. Chloride है ना, chlorine बनाएगा. Hydrogen ion है, hydrogen gas बनाएगा. Hydroxide है, oxygen gas बनाएगा. कोई भी ion discharge होता है, sodium ion है, sodium metal बनाएगा. But यहाँ पे दो rules हैं आपके पास. बात ये है, आपने चार्ज दिया, वो इलेक्ट्रोड भी तो रिएक्ट कर सकता है. सो हमारे पास द टू रूल्स दैट वी हैव, एंड दे आर सुपर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अगेन आई जस्ट वांट यू टू लाइक remember those wherever they are relevant and all that. First rule is that hold on, I might have them written somewhere. There's this file that I made last year. It's very useful. Everything you need to memorize, और chemistry fact sheet के नाम से वो फाइल है. I'll post the link in the description as well. Feel free to go to the electrolysis के वो थोड़े से 10 points हैं, उनको देख लेना. They will help you out. अच्छा, अब मैं आपको rules बता रहा था. So the first rule is that a reactive anode, and I'm talking about just the anode, not the cathode, will form ions. So अगर आपके पास graphite है तो it will not form ions. प्लैटिनम है, इट विल नॉट फॉर्म आयंस. लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी है ना, इट विल फॉर्म आयंस. सो हमारे पास कौन कौन से होते हैं?
platinum and graphite are inert और बाकी नहीं है, ठीक है। तो कॉपर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, किसी भी चीज़ का उसने रॉड बना के आपको दे दिया ना, आयरन है, कॉपर है, इट विल फॉर्म आइंस। तो आपने उसको जूम करना है कि इसके आइंस भी हैं आपके पास। उसके बाद आपने ऑब्वियसली आइंस की लिस्ट ले लेनी है, टेक दैट लिस्ट एंड देन सी that which ion will go to the cathode and which ion will go to the anode, and for that you have to remember least reactive ion discharges first except concentrated halogen और halide भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हेलोजन आयन और हैलाइड आयन। अगेन ये एक एक्सेप्शन जो है ना, ये सिर्फ इसलिए है यहाँ पे क्योंकि हमने इन चीज़ों की डिटेल ज़्यादा नहीं पढ़नी। व्हेन यू गो इनटू ए लेवल्स यू विल स्टडी कि ये एक्सेप्शन भी एक रीज़न है इसके पीछे, बट वी डोंट कंसर्न आवरसेल्व्स विद दैट एट द मोमेंट। हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रोड किससे बने हैं। अगर प्लैटिनम और ग्रेफाइट है, इलेक्ट्रोड की फिक्र छोड़ देनी है। नंबर 2, हमने आयंस को लिस्ट करना है, रिएक्टिविटी सीज के साथ उसको रिलेट करना है, एंड वी हैव टू सी विच वन इज लेस रिएक्टिव बिकॉज दैट इज़ द वन दैट्स गोइंग टू डिस्चार्ज लेस रिएक्टिव, ठीक है। सो उसको हम डिस्चार्ज करवाएंगे एंड एवरीथिंग एल्स विल रिमेन इन देयर। सो आई एम गोइंग टू टेक 3 एग्जाम्पल्स बिकॉज दोज आर द क्लासिक एग्जाम्पल्स दैट एग्जामिनर आस्क्स यू अबाउट, और उन्हीं की कोई ना कोई वेरिएशन आपके पास आ जाती है। सो द फर्स्ट वन दैट आई एम गोइंग टू टेक is, and again I'm taking all of this with graphite, so graphite electrode hai. So the first example I have is sodium chloride liquid. सबसे पहला step, identify the ions that I have sodium ions, I have chloride ions, and that's it. I will not have graphite forming ions. Why? Because graphite is inert, unreactive, so it will not form ions. अब इन दोनों ions में से anode पे कौन सा जाएगा? The anion. So chloride goes, loses the charge, makes chlorine. Chlorine I know is diatomic, so वो chlorine रखेंगे। आपने बैलेंसिंग एंड पे छोड़नी है, अभी सिर्फ आपने ऐसे लिख देना। ओके, आई हैव 2 chlorine on the right side, so I'll put 2 chloride on the left side. और बैलेंसिंग करते हुए हमने क्या करना होता है, एटम्स को बैलेंस करना है, चार्जेस को बैलेंस करना है। लेफ्ट साइड पे 2 नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो राइट साइड पे भी 2 नेगेटिव चार्जेस होंगे और बैलेंस हो गया। अब इसके कलर्स क्या हैं, क्लोरीन इज़ येलो ग्रीन, सो आई सी अ येलो ग्रीन गैस फॉर्म। ओके, तो क्लोराइड डिस्चार्ज हो गया, ख़त्म हो गया। व्हाट विल हैपन एट द कैथोड? एट द कैथोड आई हैव सोडियम आयन विच विल ऑब्वियसली गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का कलर जस्ट लाइक ऑल मेटल्स, मोस्ट मेटल्स, इट इज़ सिल्वर ग्रे। आपसे पूछता नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हो गया, दैट वाज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट्स टेक द अदर एग्जाम्पल। लेट्स से नाउ आई हैव सेम सोडियम क्लोराइड बट इट इज़ एक्वस, इट इज़ डाइल्यूट। रिमेंबर द रूल्स। फर्स्ट रूल इज़ इफ़ द इलेक्ट्रोड इज़ रिएक्टिव इट विल फॉर्म आयंस। वो तो नहीं है तो हम उसकी फिक्र छोड़ देंगे। सेकेंड रूल इज़ identify the ions, the less reactive ion discharges except concentrated halide ion. So मेरे पास ions कौन से हैं? Let's list them down. I have sodium ion, I have chloride ion, I have hydrogen ion, I have hydroxide ion. That's what I have, right? So less reactive कौन से वाला है? Less reactive positive में hydrogen है, negative में hydroxide है। अब मज़े की बात क्या है? You can see it is water that's breaking down. Impure water breaks down. Impure water does electrolysis. तो अगर कभी भी aqueous solution आ गया है और आपके पास इस तरह से ions आ गए हैं आपके सामने, so at the cathode, anode पे क्या होगा? Anode पे the anion is going to go 4OH minus makes oxygen gas, 2 water, 4 electrons. Now that's an equation I would suggest आप memorize कर लो. At the cathode I will get hydrogen ion, it will get electrons, make hydrogen gas. I have 2 and 2 here, and there you go. But here's one more interesting part that I want you to see.
आई हैड गिवन 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नीचे भी 4 ही होनी चाहिए ना, टू बैलेंस इट आउट. सो यहाँ पे भी अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स करता हूँ तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन मल्टीप्लाई ये नीचे वाली इक्वेशन बाय 2 टू शो कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आए. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. दिस बिकम्स 4H plus 4 electrons makes 2H2. And this is important, guys. This 2 here and this 1 oxygen here. This is clearly giving me a ratio of the gases that form. Hydrogen is double of oxygen. Why? H2O हाइड्रोजन डबल ही बनेगी, पहली बात ये. दूसरा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसको कैसे जज करता है, वो आपको एक सेटअप दे देगा जिसमें 2 गैसेस कलेक्ट हो रही हैं. आई गिव एन एग्जांपल. लेट्स सपोज ये सेटअप दे देता है वो आपसे कहता है कि कुछ सेटअप किया मैंने, बैटरी लगाई, सारा कुछ किया और मेरे पास इस तरह से गैसेस आ गई हैं और ऐसे मैंने गैसेस कलेक्ट कर ली हैं. ठीक है, अब हमसे वो कहता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ऑब्वियसली. तो यहाँ पर किसी एक जगह पे आपके पास ऑक्सीजन आएगी, किसी एक जगह पे हाइड्रोजन आएगी. अब लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर इस साइड पे ऑक्सीजन आएगी और इस साइड पे हाइड्रोजन आएगी. डू यू सी दैट दीज लेवल्स आर डिफरेंट. इसका लेवल नीचे है और इसका लेवल ऊपर है, विच इज शोइंग दैट आई हैव मोर हाइड्रोजन गैस. दिस इज one gas is more than the other, and this change in the value, the ratio 1 to 2 clearly shows कि ये dilute solution है और हमारे पास water breakdown हो रहा है. So इसका मतलब है HNOH आए हैं, इसका मतलब है हमारे पास जो भी solution होगा वो dilute होगा और उसमें कॉपर नहीं होगा. क्यों कॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों साइड्स पे गैसेज आ रही हैं. अगर कॉपर होता तो सॉलिड आता. सो जब भी आपके पास इस तरह से 1:2 आ रहा है, दैट शोज यू हैव डाइल्यूट सोल्यूशन ब्रेकिंग डाउन विदाउट कॉपर इन इट. अब हम ज़रा कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन को देखते हैं. इफ़ आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है मेरे पास, aqueous है. Ions that I have, the ions I have are sodium ion, chloride ion, hydrogen ion, hydroxide ion, same as before. But this time my second rule is less reactive ion discharges except concentrated halogen. So concentrated halogen है ना मेरे पास, so that will discharge and hydrogen ion will discharge. तो जब भी आप आयंस को लिस्ट करके इस तरह सर्कल कर लोगे ना, इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास शुरू में क्या है, एंड पे क्या है. So hydrogen ion will produce hydrogen gas, so it will gain electrons, make hydrogen gas. Chloride ion will make chlorine gas. And what's left? जो दो चीज़ें पीछे बची हैं, sodium and hydroxide, they will react together and make sodium hydroxide. A couple of important points. Every time H positive discharges, pH increases. तो यहाँ पर pH will increase. 2 रीज़न है. OH माइनस है, H पॉजिटिव ख़त्म, pH increases. H positive discharges, pH increases. In this case pH does not increase. क्यों? दोनों ब्रेक डाउन हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों ब्रेक डाउन हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं, pH will remain the same. सो आपको एग्जामिनर इस पर भी पूछ सकता है कि कहाँ पे pH इंक्रीज़ करती है, कहाँ पे नहीं करती है. तो दैट क्लियरली शोज़ कि जब इंक्रीज़ कर रही है तो हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हो रहा है, हाइड्रोक्साइड नहीं हो रहा. अगर डिक्रीज़ कर रही है तो हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं हो रहा. हो सकता है कॉपर हो तो इस वजह से ना हो रहा. बट अगर सेम है तो मतलब है दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं, या है ही नहीं दोनों. सो pH को भी इससे रिलेट करता है वो. बट इन ऑल ऑफ दिस यू जस्ट नीड टू क्लियरली नो द रूल्स. इफ़ यू नो द रूल्स यू विल बी फाइन. अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं इन विच आई हैव सम एनोड विच इज़ रिएक्टिव. सो मैं कॉपर एनोड के साथ काम करता हूँ. सो आई हैव कॉपर एनोड नाउ. नाउ कॉपर एनोड इज़ डिफरेंट जस्ट इन द वे, या कॉपर कैथोड भी हो तो एक ही बात है, दैट इट विल ऑल्सो फॉर्म आयंस. सो लेट्स सपोज मेरे पास कॉपर सल्फेट ही है, एक्वस है, मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ. What ions do I have? I have copper ion, I have sulfate ion, I have hydrogen ion, I have hydroxide ion, and because copper is less reactive it will discharge. Over here hydroxide will discharge.
देखते साथ मुझे पता लग रहा है pH will decrease. क्यों? हाइड्रोक्साइड रिलीज़ हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं रिलीज़ हो रहा. सो इसका मतलब है pH will decrease. Second, copper ion is going away. Color may fade. In what case will color fade? अगर उस कॉपर की जगह कोई और कॉपर नहीं आता तो दैट इज़ वेयर दिस कम्स इन. कॉपर एनोड है ना, इट विल फॉर्म आयंस. अगर यहाँ से कॉपर रिलीज़ हो रहा है, उधर से कॉपर आके उसको करेगा, कलर डज नॉट फेड. लेट्स टेक अ सिमिलर एग्जांपल बट विद ग्रेफाइट. मेरे पास अभी भी कॉपर आयंस हैं, मेरे पास सल्फेट आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस हैं. बिफोर यू डू एनीथिंग जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन से आयन रिलीज़ हो रहे हैं. कॉपर आयन रिलीज़ हो रहा है, हाइड्रोक्साइड रिलीज़ हो रहा है. हाइड्रोक्साइड रिलीज़ होने से पीएच कम होती है, कॉपर रिलीज़ होने से कलर फेड होता है. बट बिकॉज कॉपर इज़ नॉट बीइंग रिप्लेनिश्ड, ग्रेफाइट विल नॉट कम एंड टेक इट्स प्लेस. ऑब्वियसली ग्रेफाइट का कलर भी ब्लू नहीं होता है, सो द कलर विल फेड. दैट्स एन ऑब्जर्वेशन. दिस वन कलर डज नॉट फेड बिकॉज कॉपर उसकी जगह आ जाएगा, कॉपर आयन. बाकी वही इक्वेशन है. हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन याद करनी है, 4OH माइनस changes to oxygen gas, 2 water, 4 electrons. ठीक है. And what are you left with at the end? Here you are left with H2SO4 at the end in both cases. But that one will be colorless and this one will be blue at the end. So this is why we use metallic electrodes whenever we don't want the color to fade or whenever we want कि copper या कोई और metal deposit हो जाए. So this is electroplating. इसके बारे में जो information है, I would suggest you read the book, because in the book they have mentioned all of those things, the small facts that I did not mention here, because this lesson was all about understanding the concept behind things. जो extra information है वो चीज़ें आप वहाँ से read कर सकते हैं. The last topic that we have is reactivity series. It's pretty straightforward thing. Displacement principle is all you need to know. The things that are below in the reactivity series, they react slower, things higher up react faster. जितना reactive compound होगा उतना less reactive ion होगा उसमें. यानी अगर दो compounds हैं, one breaks down at 500 degree Celsius, one breaks down at 1500 degree Celsius, तो 1500 वाले में bonding strong है, इसका मतलब है metal ज़्यादा reactive है. 500 वाले में bonding weak है, इसलिए वो 500 पे ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो उसका मेटल लेस रिएक्टिव. सिमिलरली दो कंपाउंड्स हैं, एक का रिएक्शन बहुत जल्दी हो रहा है, एक का रिएक्शन स्लो हो रहा है. दो एसिड्स हैं लेट्स सपोज, एक का रिएक्शन बहुत तेज़ से हो रहा है, इसका मतलब है वो एलिमेंट लेस रिएक्टिव है. आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ HCl एंड HI. HCl इज़ लेस रिएक्टिव देन HI. क्यों? क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन I2. यानी जितना मोर रिएक्टिव एलिमेंट उतना लेस रिएक्टिव कंपाउंड. तो एग्जामिनर इसको टेस्ट करता है. एंड फॉर दैट अगेन आई वुड सजेस्ट यू रीड द बुक, बिकॉज इन द बुक देयर आर मल्टीपल स्मॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वुड सजेस्ट कि आप उनके नोट्स बनाओ, बिकॉज MCQs में और वैसे भी एग्जाम में वो उसको चेक करता है. मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस, यू यूज़, आई होप दिस लेसन माइट हैव हेल्प्ड, एंड यू यूज़ दिस लेसन to make sure that if there's any question, feel free to post it in the comments, on the WhatsApp group, DM me. There are multiple avenues to get in touch, and through all of that I'm hoping that you will be able to figure out any problems that you have, and inshallah I'll be here to help you out with that. Thank you so much. Take care. See you later. Good luck. Allah Hafiz.